Hello friends, welcome to Cherish to Learn. So today we will discuss High Court ASO General Awareness question paper. So let's start the class. First is form the following abbreviation, and number one is CSIR. The abbreviation of CSIR is Council of Scientific and Industrial Research. Then IFSC. IFSC is Indian Financial System Code. Then XHTML. XHTML is Extensible Hypertext Markup Language. Then NEFT. National Electronic Fund Transfer. National Electronic Funds Transfer. Then NABARD. NABARD is National Bank for Agriculture and Rural Development. Then who was the first person to be awarded the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳ ରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ କିଏ ହେଇଥିଲେ ନା ବିଶ୍ୱନାଥ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥିଲେ ଚେସ୍ ରେ ପାଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଆନନ୍ଦ in the year 1991 to 1992। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି यार କ୍ୟାଶ ପ୍ରାଇଜ ଦେଖାଯିବ 25 lakh କ୍ୟାଶ ପ୍ରାଇଜ ନାଉ ଏଠି ପ୍ରାଇଜ ମନି is 25 lakh। then question number 7 is who was the first law and justice minister of India? Answer is Dr. B.R. Ambedkar is the first law and justice minister. Who is the present chief justice of India? Dr. Justice Dhananjay Y. Chandrachud or D.Y. Chandrachud. Justice D.Y. Chandrachud. Which state is called fruit basket of India? The Himachal Pradesh is called fruit basket of India. Himachal Pradesh is called fruit basket of India or fruit bowl of India also called. Then UIDAI has partnered with which leading institute to develop touchless biometric capture? UIDAI कौन यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जे आधार डेवलपर से कौन कर IIT बॉम्बे सहित टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर डेवलप कर। द फर्स्ट ट्रायल बाय जूरी इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया हैपेंड इन व्हिच टाउन? आंसर इज मद्रास रे फर्स्ट ट्रायल हेतला जूरी रो इन एजेंट्स कोर्ट रे हेतला। द ट्रायल वाज वन ऑफ ब्रिटिश लेडीज मिस्टर Ascensia Joyce on charge of murdering her Indian slave. The lady was held no guilty हेतले। तो मद्रास रो द एजेंट्स कोर्ट रे हेतला फर्स्ट जूरी। The Springing Tiger, a study of revolutionary, is a biographical work on Springing Tiger, a study of biographical work on Subhash Chandra Bose। तो आको के लिखिथिले ना ह्यूग टॉय लिखिथिले biography of Subhash Chandra Bose। तो this book represents the little known fact about World War II and Anglo-Indian relation। World War II and Anglo-Indian relation विषय थिला। The author vividly describes life and philosophy, idealism, nationalism, political associations of Subhash Chandra Bose। Which article of Indian Constitution contains provision of national emergency? किए करचंदी ना आर्टिकल 352 रे रहउची। तो पार्ट XB थर्ड आई माने पार्ट 18 डिस्कस अबाउट इमरजेंसी प्रोविजन और आर्टिकल रहला नेशनल इमरजेंसी रहला आर्टिकल 352 रे। व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर परफेक्ट वैक्यूम? परफेक्ट वैक्यूम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते हला 1। तो जदि लाइट कैन चेंज स्पीड डायरेक्शन व्हेन इट गोज थ्रू डिफरेंट मटेरियल्स, ऑल मटेरियल दैट ट्रांसमिट लाइट हैव ए प्रॉपर्टी कॉल्ड इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का कहंती ना लाइट जो मटेरियल दे पास करि परिबो। तो तार ए सबडार 1 होजी कार ना परफेक्ट वैक्यूम रो होजी 1। देन 1.003 हला एयर रो, 1.33 हला वाटर, 1.5 हला ग्लास एंड 2.42 हला डायमंड। Then which port is known as Queen of Arabian Sea? तो कोची पोर्ट तो फेमस फॉर कौन? एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइस एक्सपोर्ट में फेमस थिला तो कोची पोर्ट। देन चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड इवोल्यूशन। चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड इवोल्यूशन। Then next is Roger Federer, the veteran tennis player, represent which country? Switzerland को represent करजंती Roger Federer। Then the lengthiest amendment to Indian Constitution, 42nd amendment, was enacted on which year? 1976। 42nd amendment act of 1976 जोटा कौन कहती ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहती। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहती ताको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहती। तो मेजर चेंजेस हेतला 42nd amendment act 1976 रे। Which of the following state of the economy is the flagship report of which institution?
तो एटा किए पब्लिश करे ना आरबीआई पब्लिश करे स्टेट ऑफ इकोनॉमी इज फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑफ आरबीआई. देन व्हिच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? गुजरात मोर देन 1000 किलोमीटर अच्छी पाखापाखि 1600 मे बी 1600 किलोमीटर पाखापाखि रोचे गुजरात कोस्ट लाइन. Then which article of Indian Constitution says about India shall be a union of state? Article 1. Then District Disability Rehabilitation Center DDRC is a initiative of which union ministry? तो सेटा हम कौन Ministry of Social Justice. Ministry of Social Justice and Empowerment under Department of Empowerment and Person with Disability. Empowerment of Person with Disability under जाउची से department under Ministry of Social Justice and Empowerment of Government of India. Then which film won Best Documentary Short Award in Oscar 2023 पाइतला कौन? Elephant Whisperer Indian film गुनीत मोगंकर डायरेक्शन रहितला. तो Elephant Whisperer रहितला कौन? Best Documentary Short Film in Oscar. वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क कोटा अछि ना केबुल लेमजेल नेशनल पार्क को स्टेट रो अछि ना मणिपुर स्टेट रो केबुल लेमजेल नेशनल पार्क ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क जोडा फेमस फॉर कोन डांसिंग डियर में फेमस थिला एटा गोटे रामसर साइट आल्सो अंडर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड रो अछि Then Lakshman Naik led the Quiet India movement in which district? Koraput district Lakshman Naik neitile Quiet India movement. Mircha rice which recently received GI tag is from which state or UT? तो बिहार रो होतला मिर्चा बिहार चंपारण डिस्ट्रिक्ट रही वेस्ट चंपारण. तो मिर्चा राइस है कौन को स्टेट रू पाई जीआई टैग ना बिहार रो. हु ऑथर मर्चेंट ऑफ वेनिस के लिखले ना विलियम शेक्सपियर. मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखले विलियम शेक्सपियर. What is the name of creator company of ChatGPT? ChatGPT के डेवलप करछनी OpenAI. ChatGPT OpenAI. What is the valuation of US dollar required for a privately owned company to be recognized as unicorn startup? Unicorn startup कहंती ना जार valuation रहबो more than $1 billion. तो $10 billion हेले कोन हबो? 10 billion हेले डेकाकॉर्न. 10 billion हेले डेकाकॉर्न हबो. तो 1 बिलियन हेले तो यूनिकॉर्न को जदी 1 बिलियन. तो इंडिया जदी फास्ट यूनिकॉर्न जदी को जिवो आईपीएल को कहउछ इंडिया रो फास्ट यूनिकॉर्न बोली. डू चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फ्रॉम फॉर्म ए पार्ट ऑफ एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जोडा कोन नेहरू को समय रहितला. तो एनडीसी रो पार्ट चीफ मिनिस्टर हुन नाही. एस चीफ मिनिस्टर इज द पार्ट ऑफ एनडीसी. तो एनडीसी के प्रेसिडेंट के करन ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो लास्ट टाइम पे के हेतला ना मनमोहन सिंह को टाइम रे लास्ट टाइम हेतला. तो इट कंप्राइजिंग ऑफ यूनियन मिनिस्टर. तो प्लानिंग कमिशन एरा रे एनडीसी होतला. बेसिकली मनमोहन सिंह थिले लास्ट तांकर समय ही हेतला. तो चीफ मिनिस्टर थिले तार मेंबर के थिले ना यूनियन मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड यूटी एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटोरी एंड मेंबर ऑफ प्लानिंग कमिशन. तो प्लानिंग कमिशन से टाइम रे एनडीसी ही हेतला. मनमोहन सिंह लास्ट टाइम पे करथले. तर व्हिच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द CVigil ऐप? CVigil ऐप को इंस्टीट्यूशन लॉन्च करछि ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया लॉन्च करछि. CVigil ऐप कोन पई ना टू कंप्लेन रिगार्डिंग मॉडल वायोलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शन. The process of heating the concentrated ore in the absence of limited supply of below is melting point is known as calcination. Calcination कौन कौन process of heating concentrated ore in absence of limited supply below its melting point is called calcination. Which city was the host of G20 space economy leaders meeting in India? Shillong. Shillong होजी कौन host of G20 space economy leader meeting. Which scripture is source of phrase Satyameva Jayate? Satyameva Jayate कोड आछि ना मुंडक उपनिषद रु आछि Satyameva Jayate. Then what is the outer range of Himalaya called? Himalaya रो outer range को कहंती शिवालिक और outer Himalaya मध्ये कहंती शिवालिक. India is ranked at which position in World Happiness Report? 126 रे अछि इंडिया. फर्स्ट अछि के फिनलैंड. फिनलैंड is at top. Then what is 99 in Roman numeral? तो रोमान न्यूमेरिक सिस्टम रे कोन 99 कोन कहंती XCIX. XCIX हला कोन 99.
What is the full form of PWDB with reference to PWD Act 2005? The protection of women from domestic violence. ହେଲା କ'ଣ PWDB ର full form protection of women from domestic violence. On which day the chariot construction of 3 chariot of Lord Jagannath and his siblings start? Akshaya Tritiya ରୁ start हुए, recently गला Akshaya Tritiya start हुए କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ବାଗା start हुए Akshaya Tritiya. India's first Apple store recently open ହେଇଛି କୋଉଠି? ମୁମ୍ବାଇ. ଦୁଇଟା ସିଟିରେ ଓପନ ହେଲା, ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ମୁମ୍ବାଇ, ଦେନ୍ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ. ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୁମ୍ବାଇ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ, ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ମୁମ୍ବାଇ. तर which is the oldest India IIT, oldest Indian Institute of Technology, oldest IIT कोड है खड़गपुर है 1950 रही. which article in Indian Constitution provide discretionary power to Supreme Court as necessary for doing complete justice in case cause of matter pending before it. तो article 142 होची कोन Supreme Court discretionary power for necessary doing complete justice in any cause of matter pending before it. Which is the second largest river in Odisha? Second largest is Brahmani after Mahanadi. What is the SI unity of amplitude? Amplitude or SI unity कौन है? Meter. How many bones are present in human ear? Human ear रे करते तीनटा बोन होची, तीनटा बोन गोटे ला कौन malleus, incus, steps. Malleus, incus, steps. Which autonomous body is established by UGC of India to assess accredited institution of higher education? NAC जानते समझते, the National Assessment and Accreditation Council NAC, तो under UGC rating देते हैं NAC. Who was the first Chief Justice of Odisha High Court? है कि Justice Birokishore है first Chief Justice of Odisha High Court. What is the capital of Australia? Capital of Australia है कि Canberra. Capital of Australia is Canberra. In India, the foreign exchange reserve are kept under custody of RBI. RBI custody रहता है कौन ना हमारा forex reserve था RBI custody रे. Wildlife Protection Act enacted in के 1972 रे इतला Wildlife Protection Act तापर इतला Project Tiger इतला 1973 रे. Which is the national heritage animal of India? है कि elephant. Elephant होगी national heritage animal of India. What is the atomic number of nitrogen? है 7. Nitrogen में atomic number है 7. Who authored Malgudi Days? Malgudi Days के लिखले R.K. Narayan. Malgudi Days है R.K. Narayan. Study of kidney is called nephrology. Which movie won 2023 दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म है कि कश्मीर फाइल और RRR मध्य पाइछि गोटे फिल्म रे पॉपुलर फिल्म कैटेगरी पाइछि RRR और बेस्ट फिल्म है कश्मीर फाइल्स. What is the respiratory pigment in human being called? Haemoglobin. Respiratory pigment किया है human gland रे तो hemoglobin कहती respiratory pigment. Which commission constituted on 27 April 2007 to look into the new issue of center-state relation, keeping in view the changes that have taken place in polity and economy of India? Punchi commission हितला center-state relation पे. Under the new income tax regime, what is the rate of tax for slab between income of 9 lakh to 12 lakh? तो 9 लाख 12 पे टैक्स स्लैब केते अछि 9 रु 12 लाख पे 15%. तो फायदा क्या 0 रु 3 लाख हैला 0 टैक्स, 3 लाख रु 6 लाख हैला 3 लाख रु 6 लाख हैला 5%, 6 लाख 9% हैला 9 लाख हैला केते 10% एंड 9 लाख रु 12 लाख हैला 15%. 12 लाख रु 15 लाख हैला 20% एंड एबव 15 लाख हैला 30%. तो हमर जे 9 रु 12 लाख हैले 15%. Which law states that the mass of resulting separated element is directly proportional to the atomic masses of element when an appropriate integral divisor is applied? तो अब एटा कोन सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. The decision in Keswanand Bharati versus State of Kerala 1973 introduced which doctrine with reference to Indian Constitution? Doctrine of basic structure जोटा इतला केशवानंद भारती केस रहीतला. तारे which country become most populous country in the world as per State of World Population Report? India recently surpassed कला काकू चाइना को most populous country.
Which union ministry associated with CPACE which will help in closing down business? तो CPACE कौन? Ministry of Corporate Affairs. Corporate Affairs Ministry है तो has now established a dedicated unit is कौन? Center for Processing Accelerated Corporate Exit. तो CPACE जोटा Center for Processing Accelerated Corporate Exit in IMT Manesar Gurugram रही हरियाणा रो. As part of its overall effort to speed up the voluntary winding of companies from the currently required 2 years to 6 months को reduce कर दबो. तो CPACE किए करची ना Ministry of Corporate Affairs. Which article of Indian Constitution deals with the disqualification of MP from Lok Sabha Rajya Sabha? Article 102. Recently news थिला राहुल गांधी को नेकी तो सिट में पहुंचा दीची. Article 102. Which short story has been authored by Fakirman Senapati, which is the story of young girl whose desire for education in the backdrop of a conservative Odia society in a backward village hit by a cholera epidemic. तो रेवती स्टोरी टा लिखले फास्ट कौन कि वाइल्ड रिकग्नाइज फास्ट ओडिया स्टोरी हिसाब से रिकग्नाइज करा जाए रेवती को फकीरमोहन सेनापति लिखिथिले. तो संकल्प ऑपरेशन संकल्प व्हिच हैज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ व्हिच आर्म्ड फोर्स? तो इंडियन नेवी लॉन्च करथिला कोन ऑपरेशन संकल्प. तो क्वेश्चन इज कंप्लीट. होप यू आर डूइंग वेल इन द एग्जाम. So thank you.